ప్రధాని మోదీ హోంమంత్రి అమిత్ షా పార్లమెంట్ను అవమానిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఖర్గే ఆరోపించారు. సభకు హాజరవడానికి ఎందుకు భయపడుతున్నారని ప్రశ్నించారు. తాము చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నామని, కానీ మోదీ అమిత్ షా సభకు హాజరు కాకుండా తప్పించుకుంటున్నారని అన్నారు. मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए. वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन. अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना. अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे. ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं. ये अंदर आना नहीं चाहते. इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे है, क्या है? పార్లమెంట్ ఆవరణలో విపక్షాల నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. అంబేద్కర్ విగ్రహం నుంచి మక్కద్వార్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించాయి. ఈ ర్యాలీలో రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక ఖర్గే సహా ఇతర విపక్ష ఎంపీలు పాల్గొన్నారు. ప్రధాని మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా సభకు గైర్హాజరు కావడంపై నిరసన వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థులపై దాడులకు ఎవరు ఆదేశాలు ఇచ్చారో సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. प्रभुराम का पैसा कहाँ गया? प्रभुराम का पैसा कहाँ गया? प्रभुराम का पैसा कहाँ गया? बाइक में ध्यान दे रहे हैं. आगे पुश करो, आपने पुश करो. आगे हेमंती 370 के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता था. कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न जाने कितने राष्ट्रभक्तों का जुल्म किया और उनकी हत्याएं तक की जरूरत की. माननीय प्रधानमंत्री जी की सशक्त नीतियों ने और माननीय गृह मंत्री जी की दूरदर्शी इतना कह दिया था 70 के बाद वाला जो है वो नहीं मिलेगा. लेकिन आज कश्मीर का युवा इन दलों के मार्ग से भटक गया था. This is against the rule. It is prohibited to interrupt any member when speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner. As per the rule 235, I am not going to allow you. I am going to take action against you. I am repeatedly telling. Then don't force me to do that. Now, Dr. M. Tambidurai. Sir, can I speak that? Dr. Tambidurai, sir, right, Honorable Chairman, sir, I rise to urge the Union Government to honor the long-standing and unanimous aspiration of the people of Tamil Nadu by renaming the Madras High Court as the High Court of Tamil Nadu.
The name Madras ceased to be the official name of the state capital nearly 3 decades ago when it was renamed as Chennai. However, the High Court continues to retain the colonial era name, which no longer reflects the identity aspiration of the people of Tamil Nadu. Recognizing this, the late Prachittalavi Amma, former Chief Minister of Tamil Nadu, Jayalalitha, as the Chief Minister, ensured that Tamil Nadu request the government of India to High Court of Tamil Nadu instead of Chennai High Court. Nothing will go on except the High Court is the constitutional court for the entire state of Tamil Nadu, not merely the city of Chennai. The unanimous will of the elected representative of Tamil Nadu deserves the highest respect. Renaming the High Court would not merely be a symbolic exercise. I would reform the state identity, uphold the spirit of the corporate federalism, and fulfill the Indian democracy. Sir, boy, once again urge the chairman to request the government to consider the aspiration of the Tamil Nadu people and also former Chief Minister to rename as Madras High Court as High Court of Tamil Nadu. Sir, we say thank you very much. श्रीमान संजय भाटिया जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान की सबसे पहली, एशिया की सबसे पहली और दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हरियाणा की धरती से की। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जहां 2014 से पहले हिंदुस्तान दुनिया के अन्य देशों को देखता था, उनकी बातें करता था, कि उन्होंने ये शुरुआत करी कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की बात करती है। सभापति महोदय, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ कि ये जींद से शुरू हुई, आज हरियाणा देश का पहले हाइड्रोजन रेल स्टेट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में एक बात कही जाती है, काम ऐसा करो कि दुनिया देखती जाए। आज भारत ने वही करके दिखाया जो तकनीक कभी दुनिया के चुनिंदा देशों तक सीमित थी, आज वे भारत की धरती पर दौड़ रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस ऐतिहासिक पहल का विस्तार करते हुए जींद वाया पानीपत वाया रोहतक और हिसार की तरफ से भी इसकी एक्सटेंशन की जाए, ताकि वहां के किसानों को, मजदूरों को एक जो ग्रीन एनर्जी का एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया